students, how are you? So in the previous video, if you see, we had discussed about normal reaction and the tension. So one example I would like to give you, just identify which are the normal reactions and which way they are acting. आप करना चालू कर दीजिए, बताइए क्या है. See, जैसा हमने बताया था, when normal reaction is always perpendicular to the surfaces in contact. So इस पे contact surfaces हम देखते हैं. This is a wedge. One rod is kept over here. This is the spherical surface and supported from here. So wherever contacts are there, normal reaction will act. First, इस वेज को अगर हम देखते हैं तो ये सरफेस पर है, तो इसके कारण एक सपोज N1 is acting downward, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, दैट इज N1. इनफैक्ट ये N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर mg if mass of this is m. So downward force which is acting on this surface is mg, and this surface is applying one force on this wedge, that is N1, and that is 90 degree. This is also 90. In the same way, these two surfaces are in contact over here. So इसके कारण इस पर एक रिएक्शन फोर्स आएगा, राइट, दैट इज N2, और यहां से इसके ऊपर एक आ जाएगा N2. Both the forces will be equal. Forces always act in pair. ये आप हमेशा ध्यान में रखो. फोर्स इंडिविजुअल कभी भी नहीं आता. एक फोर्स लगा दिया बस. It comes in pair. Two forces are there which are acting on two different boards. पेयर में आते हैं लेकिन एक ही पर नहीं लगते. जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया. जैसे ही हमने फोर्स F लगाया, ये ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाया. सो फोर्सेस कम इन पेयर. पेयर मीन्स बाय मैग्नीट्यूड आल्सो दे आर इक्वल, बट डायरेक्शन इज अपोजिट. And these two forces are not acting on the same object, they are acting on two different objects. हमने फोर्स लगाया इसके ऊपर और इसने भी हमारे ऊपर फोर्स लगाया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, राइट. ये इसके ऊपर हाथ पर रखा हुआ है. सो ये हमारे ऊपर कितना, हाथ पर कितना फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल पुल जितना है. इसका मास m है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है, तो ये कितना फोर्स से पुल हो रहा है, दैट इज mg. हाथ पर कितना फोर्स लगा रहा है, mg फोर्स. तो हाथ भी इसके ऊपर mg फोर्स अपवर्ड लगा रहा है इन दिस सिचुएशन. सो फोर्सेस कम इन पेयर. सो वो एग्जांपल यहाँ पे. नाउ since this is in contact with this is the contact surface, it is a tangential. So normal reaction due to this sphere is vertically upward, right? That is suppose N3. So this rod will also apply in the opposite direction on this sphere. So direction of N3 is this. One very important thing, in case of a sphere, this normal always pass through the center of the sphere. Spherical surface is there, circular ring is there, disc is there. If on the surface some force is being applied, a normal reaction due to this sphere will be perpendicular tangent, and the normal reaction due to this on the sphere will be passing through the center of the sphere. In the same way, over here, this is the contact surface. So this surface is applying one force, and this force will also, this is 90 degrees, this is also passing through the center, and this sphere is applying another force in this direction. Suppose it is N4, then this will also be N4. Another surface in contact, that is this surface. This sphere is in contact with this, so its weight is acting downward, right? mg, and I will say it is N5. Suppose this N5 is acting upward in this direction, opposite to the weight. So this way contact surfaces are there, and which way normal reaction is acting. Reaction doesn't mean that there is action and reaction. These two forces, just to distinguish in these two, दोनों को अलग अलग बताने के लिए एक को रिएक्शन बोल दिया, दूसरे को एक्शन बोल दिया. ऐसा नहीं है कि पर एक्शन हुआ तभी रिएक्शन हुआ. So action and reaction, it is a terminology being used.
इसमें किसी को भी एक्शन बोल सकते हैं, किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हैं। जैसे ये दोनों कॉन्टेक्ट में N3, तो दिस फोर्स में भी एक्शन एंड दिस में भी रिएक्शन, और दिस में भी एक्शन, दिस में भी रिएक्शन। सो एक्शन रिएक्शन कोई अलग अलग नहीं कि ये पहले एक्शन हुआ बाद में रिएक्शन हुआ, ऐसा नहीं है। कोई भी किसी को भी हम एक्शन बोल सकते हैं, किसी को रिएक्शन बोल सकते हैं। These two forces come in pair, acting in two different bodies and two different directions. Concept is clear? So I will take one example for tension. टेंशन के लिए एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं कि सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज hung over here and string is being used and tied at two supports, right? So tension कैसे एक्ट करेगा? These are the strings. These are the strings. इसका weight mg is acting downwards. अगर मास m है तो स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होता है। कंडीशन इज स्ट्रिंग्स आर मासलेस, स्ट्रिंग्स आर मासलेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो स्ट्रिंग्स आर मासलेस, मासलेस रहेंगे तभी एक स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम रहेगा। सो सपोज इन दिस टेंशन इज एक्टिंग, जैसा हमने बताया कि कांटेक्ट पॉइंट से टेंशन इन अवे रहता है हमेशा। सो यहां पर कांटेक्ट पॉइंट है, अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट टेंशन विल एक्ट। ये कांटेक्ट पॉइंट है, टेंशन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द कांटेक्ट पॉइंट, टेंशन विल एक्ट away from the contact point. Contact is this is T2. So this way tension is acting on the object as long as string is same and it is massless. दो बातें हैं, सेम स्ट्रिंग में और ये massless है तो टेंशन एवरीवेयर इट विल बी सेम, ध्यान में रखना है। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है massless स्ट्रिंग बोल करके आता है। wherever it has got some mass, this mass per unit length is given, तो उसका calculation, उसका statics will be different, so that will be discussed later. So maximum in questions it is already given that strings are massless. So concepts of tension and reaction force is clear. So we will, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? Types of forces पढ़ा हुआ है। So अभी forces कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं, राइट? फोर्सेस का क्लासिफिकेशन क्या है? तो फोर्सेस आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। फर्स्ट इज बैलेंस्ड फोर्स, सेकंड इज अनबैलेंस्ड फोर्स। सो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स की बात करेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस विथ एग्जांपल इट विल बी मोर क्लियर टू यू। एग्जांपल लेते हैं, सपोज दिस इज द सरफेस, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं उसको जरा एनालाइज करेंगे। पहले ये ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ पुल कर रहा है, तो इसका अगर मास m है तो फोर्स जो इस पर लग रहा है वो कितना है? mg फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मींस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये जब डाउनवर्ड पुल हो रहा है तो ये रिजिड सपोर्ट के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो ये सरफेस भी उसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स। सो रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg डाउनवर्ड, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। और ये ऑब्जेक्ट जो है, दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब जो फोर्सेस लग रहे हैं उसका नेट इफेक्ट जीरो है। तो हम बोलेंगे कि भाई दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, प्लस बोल रहा हूं मैं, दिस प्लस दिस, बट वेक्टर सम, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट? सो दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स। आई विल से n इज इक्वल टू mg, क्योंकि ये दोनों फोर्स जो है कहां एक्ट हो रहा है? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो रहा है। So this must be balanced force in opposite direction so that the object is at rest. So these forces are called the balanced forces. दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, in the same way horizontal force लगा देते हैं इसके ऊपर, इस सरफेस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, यहां से एक F1 फोर्स लगाया, इधर से एक F2 फोर्स लगाया, right? Two forces are applied in two different directions. So this force acting in this direction, this force is acting in this direction, and
the object is at rest में है. अगर ये रेस्ट में है तो vector sum of these two forces must be equal to 0 vector, right? मीन्स दोनों फोर्सेस का जो सम रहेगा एडिशन ऑफ इन द वेक्टर फॉर्म दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 वेक्टर, राइट? मैग्नीट्यूड मस्ट बी 0, then only it will come to rest. So if two or more than two forces are acting on an object and the body is at rest, दो कंडीशन. पहला तो two or more forces are acting on an object and the body is at rest, then the vector sum of all these forces must be equal to 0. Then these forces are called the balanced forces. तो हम यूं बोल सकते हैं कि sum of all these forces sigma f must be equal to 0. अगर ये 0 है तभी हम बोलेंगे these are the balanced forces. Of course it is a 0 vector, sum of these is 0 vector. हम बाद में इसके मैग्नीट्यूड लेंगे तो मॉड ऑफ दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नया नाम भी है, दैट इज एफ नेट बोलते हैं. मींस नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल दिस फोर्सेस कॉल्ड एफ नेट, दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर. अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं एफ नेट तो हम बोलते हैं दैट इज इक्वल टू 0. Net effect of these forces, पहले वेक्टर सम मस्ट बी 0 वेक्टर, राइट? एंड एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू 0. अगर फोर्सेस 0 हो गए तो बॉडी में क्या होता है कि स्टेट ऑफ मोशन चेंजेस ड्यू टू एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. जब फोर्स लगाते हैं तो क्या फोर्स का डेफिनेशन में चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है मतलब कि वेलोसिटी चेंज होता है, राइट? तो वेलोसिटी चेंज होता है मतलब कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और इन मोशन. व्हेन इट इज एट रेस्ट मींस वेलोसिटी इज 0. मींस force, what does it do? It changes the state of motion. It means change in velocity will not be there, means their acceleration will also not be there in this case. So A will also be equal to 0. So I will say A net or acceleration in the object. सबसे important बात है, if there are balanced forces, right, then the acceleration in the object will be 0. You may say it is net acceleration because acceleration will be by all the forces. So net acceleration will be 0, means body will maintain its state of motion. State of motion maintains the state of motion means either velocity is equal to 0 or, right, or velocity is constant, right? Velocity is constant. दो कंडीशंस होते हैं, या तो वेलोसिटी 0 होगा या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा. वेलोसिटी कांस्टेंट मींस दैट इज स्पीड and direction, both will be constant, means magnitude of velocity will not change, means and the direction of velocity will also not change. So दोनों, अगर हम बोलते हैं velocity is constant means I am talking about the magnitude as well as direction, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, means it will be moving with uniform velocity. Direction will be same, there won't be any change if the object is in motion, or if object is at rest तो वहां पर velocity 0 रहेगा. ठीक है? So this way definition of balanced force is clear. Suppose there are number of forces acting on an object. चलो एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट? इस पर एक फोर्स F1 इधर, राइट, F2 इधर, F3 इधर, F4 इधर. So many forces are acting on this object, right? This is object. Then to get the net force acting on this, सबका हमको वेक्टर सम लेना पड़ेगा. So it becomes very cumbersome to find the sum of these two, then one vector, then finding that vector and the sum with this. So net effect, it becomes very cumbersome if you are finding individually and finding the sum of these two vectors.
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हर फोर्स को हम रिजॉल्व कर देते हैं. ऑल द फोर्सेस आर रिजॉल्व इन टू डायरेक्शंस. सपोज इट इज एक्स एक्सिस ले लेते हैं, राइट, इट इज वाई एक्सिस ले लेते हैं. सो F1 को इसमें और इसमें रिजॉल्व कर दे, टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. When we finding the resultant of two vectors, if these are resolved in two different directions, so it becomes very easy to find the resultant effect. So in all the forces, if resolved in this direction and this direction, so we will get F1x, right, plus F2x plus F3x plus F4x. These are the forces, total forces along this. Similarly, in this direction, F1y plus F2y plus F3y, right, plus F4y. So all these forces are resolved in two directions, and I have written the sum in this direction and sum in this direction. This is written as sigma Fx, right? This is sigma Fx, and this is called sigma Fy. Means all the forces are resolved in two directions. If this is the balanced force, right, then sigma Fx should be equal to 0 and sigma Fy must be equal to 0. Zero vector means magnitude should be 0, right? In this case also magnitude should be 0. In this case also magnitude should be 0. In x direction, all the forces are resolved and sum of all these forces must be equal to 0. Similarly, in y direction, all the forces are resolved and sum of all those forces must be equal to 0. So in this case, for balanced forces, this is the conditions. For balanced forces, right? अब छोटा सा एग्जांपल ले लें. सपोज this is the object, right? One force is acting in this direction, and another force is acting in this direction, and angle it is suppose 37 degree, that is 53 degree. This force is F1 is equal to suppose 15 Newton. This is 10 Newton. So what is the net effect on this object? सपोज ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसके रिजोल्यूशन कर देंगे. सो ये हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल लाइन ले लेंगे, राइट, दिस इज y, दिस इज x बोल देंगे. सो fx निकालेंगे, कंपोनेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ x. सो सिंस इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वी विल डू वेक्टर एडिशन. सो इन दिस डायरेक्शन कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, सपोज हम निकालते हैं fx निकालना है. सो दिस इज 15 cos 37 degree plus, अब इसका कंपोनेंट along this is 10 cos 50 degree, but this will be minus 10 cos 53 degree. The direction is opposite. This component will be in this direction, this component in this direction. We are doing vector sum. So this direction, this is 15 cos 37 and this is 10 cos 53. So 15 cos 37, we know 37 degree. So this is 4, this is 5, this is 4. 3, 4, 5. So cos 53 and this will be 53. Cos 53 is 3 by 5. So 15 into 3 by 5 plus minus 10 into cos 53 is 3 by 5. So find the value. So 5 3 times, 5 2 times, that is 12. Minus 6, that is 6 Newton. In this direction 6 Newton. Similarly in y direction we will find that will be Fy. Fy is 15 sin 37 degree plus 10 sin 53 degree. You see, in y direction component both will be positive. So that is why I have written both positive. And sin 37 is 15 into 3 by 5 plus 10 into sin 53, this is 53 degree, so 4 by 5. So 5 3 times will go, 5 2 times will go, we will get 9 plus 8, that is 17 Newton. So Fx and Fy is known.
then we can find the resultant, net force acting on this. Therefore, F net is equal to under root Fx square plus Fy square, that is under root. Fx is how much? 6. 6 square plus 17 square, and this calculation you can do and you will get S net. For direction, suppose this net force is acting Fx positive, so it may be working, F net will be somewhere, F net will go in this direction. So this angle, suppose theta, therefore tan theta is equal to Fy upon Fx, that is 17 by 6. Therefore theta is equal to tan inverse 17 by 6. So this way you can find the direction and net force acting on the object. So concept of balanced force is clear. Now I will talk about unbalanced force. जैसा हमने बोला था कि balanced force रहा तो net acceleration in the object is 0, right? Means either the object is at rest, velocity is 0, or the velocity is constant, that is uniform velocity. Uniform velocity का meaning क्या है कि when we talk about velocity, not the speed, when I talk about velocity means I am talking about the magnitude as well as direction. जब हम यूनिफॉर्म बोलते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन इज आल्सो नॉट चेंजिंग, राइट? देन फॉर द बैलेंस्ड फोर्सेस वेलोसिटी इज कांस्टेंट और वेलोसिटी इज 0. फॉर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, सपोज हम बोलते हैं, सिमिलर एग्जांपल आई विल टेक, सपोज दिस इज F1, right? And this is F2. If these two are not equal, it is not balanced one. If F1 is greater than F2 by magnitude, F1 is greater than F2 by magnitude, what will happen? F1 minus F2, if you are doing sum, vector sum, so this will be positive. If I have taken this direction as positive and this direction is negative, so F1 plus F2 means F1 minus F2 opposite direction it is, isn't it? So F1 plus F2 will not be equal to 0, means in this case vector sum of these two vectors will not be equal to 0. So since F1 is greater than F2 by magnitude, body will start moving in this direction. Because net force is there, therefore F net, if I talk, right, F net will not be equal to 0. Magnitude, if I talk about, the F net will not be equal to 0 because F1 is greater than. So such forces where number of forces are there, 2 or more than 2 forces are there, and net effect of these forces is not equal to 0, as was the case of balanced forces. अगर नेट इफेक्ट 0 नहीं है तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस. एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के केस में बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आ जाता है. एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है? सो जैसा हमने एग्जांपल दिया था, तो नेट फोर्स जो हमने निकाला, राइट, दैट वाज नॉट इक्वल टू 0. So net force 0 नहीं है, magnitude means it will start moving in some direction. हमने resolution किया, भाई it is not equal to 0, it means it start moving. resolution की बात की हमने सिर्फ उस केस में कि भाई resolve करते हैं तो कैसे sigma x निकालते हैं, sigma y निकालते हैं, sigma fx and sigma fy. For that I had given that example. That was not the example of balanced forces. That was the example of how we will resolve the forces and sigma fx and sigma fy is being found, and how we'll find the resultant of these forces. That was not the example of balanced forces. So resolution, how do we do that? I had shown. If the resultant of these two forces, that is F net, is not equal to 0, in that case body will start moving in the direction of the force applied. It will be accelerated in the direction of the force applied. Right? So that is the outcome of unbalanced forces. So I can take the example, the previous example which I had taken,
that is the example of unbalanced forces, we can say, because forces were there. So net force was not equal to 0. It was having under root 6 square plus 17 square that I have seen. So with that force, it will start moving, and with the direction also I had shown उस direction में वो object move करना शुरू कर देगा. I will take one example, things will be more clear. सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर एक फोर्स इधर से लगाया हमने 10 न्यूटन का, एंड इन दिस डायरेक्शन इट इज 2 न्यूटन. मास इज, सपोज its mass is 2 kg, right? So whether this object will move or not, if it moves, then what will be the acceleration? So we will find F net we will find. So 10 Newton in this direction, 2 Newton in this direction, that is 8 Newton. Net force is 8 Newton, and this positive means this direction is taken as positive, right? So with 10 Newton force will act on this. So mass is this. So it F net, F is equal to, if we denote F net as F, that is mass into acceleration. Therefore 8 is equal to mass is 2 kg with acceleration is A. So A will be 8 by 2, that is 4 meters per second square. With this acceleration, body will start moving in this direction. So this is the example of unbalanced force, right? So balanced and unbalanced force concept is clear. Now I will talk about what is inertia.